शेक्सपियर की प्ले आपने पढ़े भी ज़रूर होंगे और शायद देखे भी, मगर ये प्ले लव्स लेबर लॉस्ट, इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि डायरेक्टर माइकल खान ने इस प्ले को इंडिया में सेट किया और इंडियन एक्टर्स यूज़ करके सब कॉन्टिनेंट के टैलेंट को सामने लेके आए हैं। हमने इस प्ले की कास्ट के साथ कुछ एक्सक्लूसिव टाइम बिहाइंड द सीन्स गुजारा है, आइए देखते हैं। But pardon me, I am too sudden bold to teach a teacher ill beseemeth me. Vouchsafe to read the purpose of my coming, and suddenly resolve me in my suit. Madam, I will, if suddenly I may. You will the sooner that I were away, for you'll prove perjured if you make me stay. जैसे ये जो प्ले है शेक्सपियर ने, आपको मालूम है शेक्सपियर ने लिखा है, और मैं वे थोड़ा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। ऐसा है कि 3 लॉर्ड हैं जो एक सिटी में आते हैं, नवार में एक सिटी में आते हैं। ये तो 3 जैसे प्रिंस होते हैं पढ़ाई करने के लिए। कहते हैं हम यहाँ आएंगे 3 साल के लिए और हम एक किंग के साथ पढ़ाई करेंगे 3 साल के लिए। लड़कियों को नहीं देखेंगे, वैसे सोएंगे भी बस 3 घंटे एक रात में, खाना भी फास्ट हम करेंगे। 3 साल के लिए हम ये सब करेंगे। Normally the production is done where it's the king and his 3 lords and they all come from one court. And so in this production, Baroon and the 2 in Dumaine and Longueville, the 3 lords are rock stars from America coming to India, and the king of Navarre is sort of an Indian king. So he's a young king who's inherited his kingdom from his father, and his father and the king of France had business dealings, which has then forced upon him to do business dealings with the king of France's daughter, which has then thrown everything into a topsy-turvy. फ्रांस से 3 लड़कियां आ जाती हैं कुछ काम करने के लिए यहीं पे, वेरी कन्वीनियंट। तो वो आ जाते हैं, उनका प्यार हो जाता है, तो वो जो उनने ये जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, लड़कियों के पीछे भाग जाते हैं। The conceit of the show being Indian, there was a lot of things being Indian that I felt I had the responsibility to bring to the show, bringing as much authenticity as you can to bringing to a Shakespeare comedy. I mean, you know, you take liberation with anything when you put it on top of a Shakespearean show, I think. मगर एंड में जो होता है, हम प्ले देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ये 3 और ये 3 तो शादी हो जाएगी, मगर एंड में जो प्रिंसेस है जो फ्रांस से आती है, उनके पिता की डेथ हो जाती है, तो वो चल जाते हैं वापस। तो जो हम देख रहे हैं लव स्टोरी, और हम सोच रहे हैं यार ये तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ये बॉलीवुड फिल्म ही हो गया, ये तो बस मज़ा ही आ गया, मगर एंड में तो सब रोना धोना, लड़कियां चल जाती है, कहती है कि 1 साल के लिए हम बस कुछ नहीं करेंगे, 1 साल के बाद अगर फिर भी ये प्यार है तो हम देख लेते हैं उसके बाद। तो यानी कि ड्रामा के आखिर में ख़वातीन जो हैं वो ज़रा यानी मर्दों के ऊपर, यानी वो मर्दों को ये तकाज़ा देते हैं कि आप 1 साल तक वैसा करें, फिर बाद में हम फैसला करेंगे। So it's very much a feminist play. वो ज़रूरी एक ख़वातीन के नुक्ते नज़र से बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। हमने जो यहाँ किया है कि हमने जो सिटी है नवार, जहाँ लॉर्ड्स प्रिंसेस पढ़ाई कर रहे हैं, हमने नवार को इंडिया में रख दिया, और ये जो किंग है, नवार के जो किंग हैं, वो महाऋषि है। तो सोचो 1960s में जो बीटल्स होते थे ना, वो है प्रिंसेस जो आए हैं नवार में, वो 3 जो हैं वो बीटल्स हैं, और ये महाऋषि है, महाऋषि के साथ पढ़ाई करने आए हैं, और तो यही सेटिंग है, तो इसलिए हमारे प्ले में बहुत सारे इंडियन कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत मज़ा है। I think I was really excited by the premise and by the fact that India was going to be such a central part of the show. I thought that was exciting, and I think it's exciting that that's finding its way into American culture more. Like, you know, you see the big Time magazine, and you see Bend It Like Beckham and Monsoon Wedding, and you find Lagan in Blockbuster Video now, you know? Well, each play is very different. Each one is unique, and it depends upon how the director envisions the production. You know, I find this production extremely unique. 5 years ago, I did Taming of the Shrew, and they set it in the 70s. And there actually was a Vespa in that production. So, but I find that this production is very unique, very colorful, and it's just wonderful that they're setting it in India, because it means opportunities for
actors from India or Pakistan. And unfortunately, in American theater, that doesn't happen so often. As painfully to pour upon a book to seek the light of truth, while truth the while doth falsely blind the eyesight of its look. जब इस ड्रामे का डायरेक्टर माइकल खान ने बुनियादी ख्याल रखा कि वो सन 68 में हिंदुस्तान में हों कि खैर शेक्सपियर ने शेख ज़ुबैर ने कोई सितार नवाज़ का पार्ट नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने सितार नवाज़ को शामिल कर दिया प्रोग्राम में, और मेरी खुशकिस्मती हुई कि मैं मौका मिला कि मैं इसमें शरीक हो सकता हूँ। तो यानी माहौल बनाने के लिए सितार नवाज़ है, मैं कुछ बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बजाता हूँ। So with the 60s concept that Michael Kahn has imagined, here the way the decree that they set matches perfectly what the Beatles wanted to go do with the Maharishi. So that was our starting point. मैं ensemble में हूँ, जो है पीछे होते हैं हम, वैसे लीड रोल, मैं लीड रोल नहीं हूँ, हम पीछे थोड़ा बैकग्राउंड के लिए हैं, थोड़ा मैं सर्वेंट भी प्ले करता हूँ, मैं मैंगो लस्सी भी सर्व कर लेता हूँ। एंड में जब सारा प्ले वे सर हम कुछ डांस वांस करते हैं, मैं भी पीछे हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ। और मेरे आई थिंक जो मेन है कि जो सारे इंडियन रोल्स हैं जो मेन हैं, मैं उन्हें कवर करता हूँ। My role, I play Moth, who is one of the servants of the Maharishi, and he's kind of the wisecracking, know-it-all servant, lackey, and he is paired up with Don Armado, who is the big famous Spaniard who comes to court, and so I'm kind of the little know-it-all sidekick. The show is about love, and I think where else to find such beautiful, exotic, and different types of love than in India? I am what I always play. I'm the little guy. I think I've sort of mastered playing the little, I'm the little ethnic guy. And it's wonderful because 50 years ago, Peter Sellers and Alec Guinness were doing that. So it's just nice that I get to continue doing that character. I'm also a musician in this show. I play the tabla. I had never known how to play the tabla before. एक नया तजुर्बा, क्योंकि सच ये है कि कॉलेज में मैंने शेक्सपियर के चंद ड्रामे पढ़े, लेकिन मैं लफ्ज़ बिस्लास को नहीं जानता था। तो सिर्फ यानी वो शेक्सपियर थिएटर बहुत यानी वाशिंगटन में 2 बड़े थिएटरों में से एक है, इसमें शरीक होने का मौका तो बहुत खुशी की बात थी। और ये भी कि आखिरकार हमें यानी 2 हफ्ते जाने का मौका मिलेगा स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, where we'll be performing for the Royal Shakespeare Company, and someone said perhaps you'll be performing for the Queen. और ये भी सोचने की बात है। I think सबसे इंस्पिरेशन मिली है मुझे, हर एक लोग में बस 1 या 2 चीज़ हैं जो इंस्पिरेशन मिलती है मुझे सबसे। But this production, I think, makes it so relatable. Like, it's like, oh, we know these people already. You know, we know why they're here, and we can understand that. I think it turns kind of so-so play into like a really good show. तकरीबन तमाम ड्रामों का एक कंपोज़र होता है, और इस ड्रामे में एक एडम वर्निक हैं, और जिस तरह उन्होंने ख़ास तौर पर वो शेक्सपियरियन पोएट्री रॉक इडियम में रखा, वो बिल्कुल जीनियस की बात है। But to force, without forcing, the Shakespearean lyrics into rock songs, just absolutely beautiful. And I hope that my small contribution in using Indian music, मैंने ख़ास तौर पर हर एक सीन के लिए एक राग रखा। शुरू में मैं नारायणी बजाता हूँ, बहुत नादिर राग है लेकिन खुशी का राग है, 8 सेकंड 10 सेकंड बस, लेकिन नारायणी तो है। फिर वो बादशाह के सॉनेट के लिए मियां मल्हार, जो एक्ट 2 की ओपनिंग में जब जोली नाचती हैं, फिर राग देश जो बहुत खुशी का राग है, और फिर इन द प्ले विद इन द प्ले तो राग पीलू, डिफरेंट अप्रोचेस टू पीलू। The sonnets that they do with the rock music, I think, is one of
the most clever things I've ever seen done, working with Shakespeare text and the modern world, like how to mix those two together. And I really liked it. I thought that was very well done. And I also think the sitar music and the tabla music that is added in between transitions and added when I start dancing, I think it's smoothly put into there, and it brings out the world of India a little bit more. We actually are preserving the play in many ways by modernizing it. And on top of that, by having it set in having two people from America and France and people from India, it sort of makes the play pop on a sort of universal level. So the fact that Indians, as well as Americans, are both wise and foolish, and both in love and both can forswear love, sort of cuts like a humanity swath across, so that Shakespeare was human before he was English, before he was Indian, before he was American. The 60s were a revolutionary period for American culture. Going on beyond the spiritual questioning, what is our culture worth, who are we, there was the whole question of women's liberation and the role of women. This play is an excellent example of how the women really take over. अगर उर्दू में बता दूं कि उस वक्त ज़रा जवान लोगों में रूहानी ख्वाहिशें बहुत थीं कि वो अपनी शख्सियत, अपनी आइडेंटिटी को ज़रा डिस्कवर करना चाहते थे, और सफ़र करने से लोगों को तजुर्बा मिला, और मेरे जैसे बहुत से लोग सारी दुनिया घूम फिरते रहे। कुछ लोगों के ख़ास मक़ासद, जैसे मेरा ये था सितार सीखने का, दूसरे लोगों सिर्फ तलाश। Again, that's another place where Michael in this production hit gold. I mean, you're sitting in your seats to make Shakespeare pop, especially this play, which is very, very wordy. The plot is very uneventful. Sort of all of a sudden a drum set appears on the thing, or a sitar player comes, and people are singing lines of poetry, or every little song is set to music. We had a great composer. It sort of makes it pop. Okay, well, I'll talk from my world, specifically in the acting world. There are less jobs for women. I think in this play, what's so great about it is because it's also done in the 60s, these women, these 4 women, they're strong and they're fierce, and they're very just direct and open and honest. And I really like that. I really love that. And that's, I think, why it works so well in the 60s time period. बहुत से स्टोरीज है ज़िंदगी में जो लोग बता नहीं पाते, या लोग they can't talk about it. बहुत सारे रिलीजन के बारे में, टेररिज्म के बारे में, जैसे अडल्ट थीम्स भी होते हैं, तो एज एन एक्टर मुझे अच्छा लगता है कि मैं बता सकता हूँ स्टेज पे, मैं एजुकेट कर सकता हूँ लोगों को कि ज़िंदगी कैसी होती है, रियल लाइफ कैसी होती है, जो लोग बात नहीं कर सकते. It's a very strong concept, and it's a very strong ensemble piece, and it's a very strongly executed concept. And I think that would negate any naysayers, any critics who are wary of those kinds of productions that just throw Shakespeare somewhere else just to market it or just to make it different. So I think for this piece, it really makes the play clearer than it would be had we set it in 1600s, because it was so clear to them, because the people that they are mocking, the people that they are portraying, everybody knew them. These 4 women, these 4 characters, they're kind of like, we didn't understand your gestures of love towards us because they have no basis. You haven't talked to us, you haven't been with us, you haven't spent time with us. All you have seen is our physical surface. And so yes, in a way, it's like these women are like, you need to know me in order to love me. And that, yeah, I think does open doors to that. Women, to me, hold it all in their hands. They're beautiful physically, and inside there's just so much strength and so much, there's just that Mother Earth that is there, I believe, in women. And I think this play is just like, look, man, like, you can love me, but don't love this, love this. And I think that's what that play says. And I think in this production, it's wonderful because it's opening the eyes of so many people who, most of the time, have never heard that music, the Desi music. Or they've heard of a sitar or a tabla, and now they get to see it. So it's entertaining and it's heightening the story, but it's also informing.
यानी अपनी तौर पर मौसीकी में दूसरे तहज़ीबों के मौसीकी को सीखने से या सुनने से हमारे अपनी मौसीकी के बारे में हम कुछ और जानते हैं in a light way, and particularly with the gender question, I think. My big idea in theater is I do want to educate. You know, I want to entertain, I want to get a story across, but also I think it's very important for us to show people a culture that they might have not been accustomed to. And it's not their fault, but their eyes are open to something new. They're listening, they're seeing new things, and I think if we can do that with as many countries as possible, that's a great thing, especially in South Asia, because it has so much to offer. एक चीज़ जो हमें बार बार सुनने को मिली वो ये कि शेक्सपियर के इस प्ले को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से एग्जीक्यूट करने के बाद शेक्सपियर का असल मैसेज ज़्यादा आसानी से समझ में आया। और दूसरा पहलू ये कि अगर आपको किसी के करीब होना है या किसी से दोस्ती करनी है तो पहले आप उसका दिल जीतें। इमरान सिद्दीकी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।